अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? आज हमारा लेसन है टीचर बोलेगी और स्टूडेंट रिपीट करेगा। मैं साथ-साथ आपके साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी, कैसे सेंटेंस है, कई क्वेश्चंस है, कई सेंटेंसेस है। आप एवरी डे 5 दिन 5 टाइम्स इसको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश जल्द नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको इंग्लिश बहुत जल्द आ जाएगी। जैसे कि हम कार चलाते हैं, हम सोचते हैं भी प्रैक्टिस नहीं करें तो हम चला लेंगे, नहीं। जो भी काम है दिल लगा के करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएँगे। चलो हम लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। टीचर बोलेगी, स्टूडेंट सुनेगा, फिर स्टूडेंट रिपीट करेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। टीचर, हेलो। जब मैं स्टूडेंट बोलूँगी फिर आपका काम है रिपीट करना। ओके स्टूडेंट रिपीट। गुड, एक्सीलेंट, वेल डन। हेलो। बड़ा आसानी से जैसे आप पहली बार किसी से मिलते हो, आप बोलते हो हेलो। जैसे हम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, गोरे बोलते हैं हेलो इन इंग्लिश। काफ़ी सिंपल है, एक ही वर्ड है। जो आपको मुश्किल लगे वीडियो में आप रिपीट कर सकते हैं या पॉज़ कर सकते हैं वीडियो को या पीछे रिवाइंड करके जा सकते हैं, जो आपको ईज़ी लगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? ये अब इसके एंड पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ आर यू? आप कैसे हो? अभी स्टूडेंट्स आप रिपीट करो। गुड, एक्सीलेंट, वेल डन। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? जब हम बोलते हैं हाउ आर यू, वो भी बोलेंगे हाउ आर यू। सो आप आगे जवाब क्या देंगे? हम आपको बताते हैं। I am fine. I am fine. मैं ठीक हूँ। I am fine. Okay, students, repeat करो. Good, excellent. I am fine. So वो पूछे how are you? आपने बोलना I am fine. मैं ठीक हूँ। छोटे छोटे सेंटेंस आप बोलेंगे, आप जल्द सीख जाएंगे। Good. What's your name? What's your name? आपका नाम क्या है? What's your name? Okay, students, repeat करो. Good, excellent. अब ये पूछ रहा है आपका नाम क्या है? What's your name? फिर आपने नाम बताना है। जैसे कि my name is Mohammed, वो जवाब देना है। Good. अभी आ गया जवाब। My name is
Ahmed. मेरा नाम Ahmed है. My name is Ahmed. Students repeat. Good, excellent. My name is Ahmed. ये वीडियो स्लो है. मैं बोल रही हूँ स्लो, इसलिए आपको बहुत आसानी से आप रिपीट करें. इंशाल्लाह आप एवरी डे रिपीट करें. और भी वीडियो है, आप देखें. आपको इंग्लिश जल्द 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 से जल्द आ जाएगी. How much is this? How much is this? ये कितने का है? आप अब शॉपिंग चले गए हो, क्योंकि वो आपको नजर आ रहा है वीडियो पे, वो शॉपिंग ट्रॉली है. और आप पूछ रहे हो हाउ मच इज दिस. ओके स्टूडेंट्स, आप रिपीट करो. Good, excellent. How much is this? आप पूछ रहे हो ये कितने की है. I want this. I want this. ये मैंने लेनी है. जैसे कि आप शॉपिंग जाते हो, आपने कुछ उठाया है, जैसे कि कस्टर्ड पाउडर हो गया, आपने बोला हमने ये लेना है. I want this. So repeat, please, students. Good. I want this. Excellent. Good learning. ये शॉर्ट सेंटेंस है, इजी सेंटेंस है, कोई मुश्किल नहीं है इनमें. मैं इसलिए आराम से बोल रही हूँ, आपको समझ आ जाए सबको. Any discount. Any discount. ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है. कोई रायत. एनी डिस्काउंट, इसका मतलब ये चीज आप सस्ती कर सकते हैं, कोई डिस्काउंट मिलेगा. एनी डिस्काउंट, वो पूछ रहा क्वेश्चन. चलो ठीक है स्टूडेंट्स, रिपीट. Good, excellent, good. Any discount. Help me, please. Help me, please. बड़ा करम मेरी मदद करें. बड़ी करम मेरी मदद करें. Help me, please. जैसे आप क्लास में हो, टीचर किसी के साथ काम कर रही है, आप अपने काम पे समझ नहीं लग रही आपकी स्टडी में, आप कह सकते हो हेल्प मी प्लीज. ओके स्टूडेंट्स, रिपीट. Excellent, very good. Help me please. Can you show
me the way. क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? Can you show me the way? अभी ये गुमा हुआ है, ये रास्ता ढूंढ रहा है, शायद ये ट्रेन पे है, शायद ये रोड पे है, पता नहीं, लेकिन वो घूम गया है। सो वो बोल रहा है, कैन यू शो मी द वे। चलो स्टूडेंट्स रिपीट। Good, excellent, good job. Can you show me the way? Excuse me, माफ कीजिएगा। Excuse me. ये बोलेंगे एक्सक्यूज मी जब आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो एक्सक्यूज मी। ओके स्टूडेंट्स रिपीट। Excellent, well done, good learning, very good. Excuse me. We need a table. We need a table. जब आप रेस्टोरेंट जाते हो, हमें एक मेज की जरूरत है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने टेबल लेना है फैमिली के साथ, सो आप बोलेंगे वी नीड a table. Okay students repeat. Excellent, very good. We need a table. ये रेस्टोरेंट की सेंटेंसेस है, या आप आउटिंग पे हो, आपने टेबल लेना है, सो आप बोल सकते हैं वी नीड a table. Bring the bill please. बड़ा करम बिल ले आए। Bring the bill please. Okay students repeat. Good, excellent, good learning. Bring the bill please. उसको बिल चाहिए, ऑब्वियसली उन्होंने खाना खत्म कर लिया, अभी वो बिल मांग रहे। Bring the bill please. Show me the menu please. Show me the menu please. बड़ा करम करें, मुझे मेन्यू दिखाएं। Show me the menu please. Okay students repeat करना sentence. Good, excellent. Show me the menu please. आपने और कुछ इंग्लिश में सीखना है सेंटेंसेस, जो आप मुझे कमेंट्स पे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी। Can
I ask a question? अभी ये एक क्वेश्चन पूछ रही है, क्वेश्चन मार्क है एंड पे. Can I ask a question? क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? Can I ask a question? Students, repeat. Good. जब आप क्वेश्चन पूछेंगे फिर क्वेश्चन मार्क एंड पे आता है, वरना नहीं आता. सो जब कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन मार्क एंड हमेशा आता है. कैन आई आस्क a question? I am late. I am late. मैं देर कर रहा हूँ. I am late. Students, repeat. Good. जब आप काम के लिए लेट हो जाते हो, आप बोल सकते हो to आपने जरा बॉस है आपका, आप बोल सकते हो I am late. मैं देर कर रहा हूँ. Good. Excellent learning. I didn't understand. मैं समझा नहीं. I didn't understand. मुझे समझ नहीं आई. So ये बोलेंगे I didn't understand. Okay, students, repeat. Excellent, very good. Good learning. अच्छा, ये हमारा वीडियो एंड हो गया. इंशाल्लाह आप एवरीडे वीडियो देखें, आप प्रैक्टिस करें. मेरे और चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं, आप उन पे जाके लर्न कर सकते हो. प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब. अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, शायद वो भी सीखना चाहे अपनी फैमिली में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग. अल्लाह हाफिज़.